हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफाइन फूड। मैं हूँ चित्रा। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से वेज मोमोज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बोनस टिप है, मोमोज स्टीम होने के बाद मोमोज को स्टेनर में रखें ताकि मोमोज के बेस में जो भी वेपर का पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। इससे मोमोज खाते वक्त बेस गीला नहीं रहेगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।